United States is going to leave NATO and the United Nations. Elon's sudden move. There's so much happening, so many updates in the world right now that it's so hard to like keep track of everything. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इलॉन मस्क। अब इलॉन मस्क के बारे में क्या कहूँ मैं आज के समय। यूएस मीडिया तो इनको कहता है मस्क ऑलमाइटी मस्क, जो अनऑफिशियली What is this, My Hero Academia? यूएस See, All Might? They're calling the Elon All Might? के प्रेसिडेंट भी हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और वॉशिंगटन के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट। इनका फोन आता है यूएसए में, हर मिनिस्टर उठाता है फोन, और डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं जो इलॉन मस्क की नहीं सुनेगा उसको मैं नौकरी से निकाल दूंगा। और आपके सामने है किस तरीके से ट्रंप काफी बार इस तरीके से मीटिंग्स रखते हैं जहां पर ट्रंप के कैबिनेट के सभी लोग, इनके विदेश मंत्री, इनके हेल्थ मिनिस्टर और वेरियस और टाइप के मिनिस्टर्स, ये सब बैठते हैं और यहाँ पर इलॉन मस्क खड़े होकर कहते हैं कि अब हम आने वाले समय में ये काम करेंगे। इलॉन मस्क लिटरली ना आज के समय ईमेल भेज रहे हैं इन सब मंत्रियों के मंत्रालयों के ऑफिशियल्स को, और वहां पे That is just coming up into my head. There are so many people who are mad, and I am definitely one of these people who don't like these unelected officials who get to go in and have these long-term limits in government, right? And can make influential changes. However, Elon was appointed by the president. I think there's a slight difference than like people like Nancy Pelosi who kind of worked their way in. Maybe she's not the best example, but the people who are unelected by the mass of people who just kind of like work their way through government, a little different than being appointed by the president. लिखा होता है ईमेल में, बताओ इस हफ्ते I've had to think about where I stand on that. Elon Musk is not just the most powerful person in US. Perhaps आप कह सकते हैं यूएस की हिस्ट्री में पिछले 20-25 सालों में इनसे ज्यादा पावरफुल आदमी दिखा He definitely is a super powerful man, though. He's not the most powerful, though. नहीं है। That still belongs to Donald Trump. एक स्टेटमेंट दी है जो वर्ल्ड मीडिया में आग की तरह फैल गई है। इलॉन मस्क ने ऑफिशियली ये बात बोल दी है कि यूएस को नेटो और यूनाइटेड नेशंस छोड़ देना चाहिए, समय आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मस्क ने ओपनली इस आइडिया को बैक करना शुरू कर दिया है कि यूएसए शुड एग्जिट यूनाइटेड नेशंस एंड नेटो। ये देखिए हमारे समय का सबसे बड़ा बदलाव होगा, और मुझे लग रहा है आने वाले 5 सालों में 2029 तक मैं आपको बता दूं दुनिया कंप्लीटली बदल चुकी होगी। इजराइल बहुत That would be he's saying like, hold on, let me see this again. 2029 तक मैं आपको बता दूं दुनिया कंप्लीटली बदल Yeah, he's saying in the next 5 years the world's going to completely change. I completely agree. I think these next 4 years of Trump is going to shake up the world, and I don't know for better or for worse, but it's going to be for better or for worse. We're going to find out, and I hope it's for the better. चुकी होगी। इजराइल Good, leave NATO, but UN. That's what I'm like. I'm. Why are we backing out of everything? NATO makes sense. We pay way more than they do, especially when a lot of the conflicts are in their backyards, right? And we currently have our own conflicts. I don't know if we've forgotten, but we kind of have our own like terrorist groups now south of the border, neighboring us. I don't say we finally, but we actually have terrorist groups that neighbor our country now in Mexico and South America, right? And we're labeling them, these cartels, as terrorist groups, and they've already been attacking us. And if you follow that thread, there's actually some movement there. So there needs to be focus and noise in that direction. And I would like to pull out of conflicts like Ukraine and whatnot. And instead of sending money, billions of dollars for like bombs and shit, I'm still down with sending money, but ideally, for like infrastructure, building hospitals, building schools, just getting Ukraine into like a true first world country, even though I know it has like, shopping malls or whatnot, maybe first world country, more developed. बहुत ज़्यादा विस्तार कर चुका होगा। दुनिया के कई अलायंसेस और संगठन ISIS is gonna टूट चुके fall? होंगे, What you mean? और दुनिया में नई सुपर पावर्स उभरेंगी जो रोल निभाएंगी एज बीइंग द सेंटर पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी। और यहाँ पे आप देख पाओगे इलॉन मस्क की ये जो ट्वीट है ये वायरल हो चुकी है, जहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर कह रहा है इट इज टाइम टू लीव नेटो एंड द यूएन, और इलॉन मस्क यहाँ पर एग्री कर रहे हैं। और Okay, hold on. Let me. You know how I like using AI now. This is so. Grok, I think, is fantastic as well. What are the pros and cons of the U.S. leaving NATO and the UN? Pros: reduce financial burden. Exactly what I was highlighting.
strategic autonomy. Without NATO, the U.S. could pursue its foreign policy independently, free from alliance obligations that might drag it into conflicts, like defending smaller members like the Baltics against Russia. Interesting. Incentive for European self-reliance. U.S. Withdrawal might force Europe nations to bolster their own militaries, reducing their dependence on American power. Cons: it weakens global influence. Are we sure that's a con? NATO amplifies U.S. power by aligning 31 nations under its leadership. Leaving could diminish America's ability to shape European security and counter Russia. But if it's European security, why is that America's problem? How is this? I don't know if this is a con. Embroidered adversaries. Russia, in particular, might exploit a fractured NATO to expand influence in Western or Eastern Europe, as seen in Ukraine and Georgia. China could also gain leverage in Asia, like Taiwan, without unified Western bloc. Once more, this seems like issues that are in Europe. I don't want to be rude, but what do we have to do with this? Economic fallout. NATO supports a stable Europe, a key U.S. trading partner. Instability could disrupt market supply chains and dollar dominance. Well, that's fine if everyone's going Bitcoin. Okay, here we go. This is really the one that I have questions on, is U.S. leaving the UN. One, cost savings. The U.S. largest single contributor to the UN budget is around 22% of the regular budget and 27% of peacekeeping costs, totaling billions annually. Saving up front. Okay, sovereignty. Critics argue the UN infringes on national decisions making through resolutions or treaties. Leaving could allow the U.S. to act without international oversight of compromise. Avoiding bureaucratic inefficiency. I love that. Escaping political bias. Also love that. Cons: reduced diplomatic leverage. The UN provides a platform for the U.S. to rally global support, push sanctions, i.e. Iran, North Korea, and legitimize actions like Gulf War. Leaving could isolate the U.S. diplomatically. I don't think we'd be isolated. I think we'd find friends, right? We'd find friends in low places. Global instability, loss of veto power, and trade cooperation risk. The UN facilitates international standards, aviation, shipping, climate agreements that benefit the U.S. business. How do they benefit? If we're going in, like, if it's costing us a lot of money, how is it, like, is the benefit worth the cost? Could we still get similar benefits, if not the same benefits, and do it cheaper on our own? I feel like this is like the UN facilitates international standards. I feel like this is, if you're a talent and you have a manager, your manager, if it's like Elvis, the general, very corrupt and is greedy, sure, could facilitate deals with you. But at the end of the day, the deals are aligning in favor of them. Sure, you get a deal out of it, but it's not a very beneficial deal for you. But if you are on your own, like a Joe Rogan-esque type talent, or just you, a small knit team, and just cranking out by yourself and just truly being undeniable, then I disagree with this. Potential. I just think America is great. Maybe I'm biased. Broader consideration, interconnectedness. Leaving both NATO and the UN could signal a broader U.S. retreat from global leadership, possibly encouraging allies to realign with powers, i.e. China's Belt or Road Initiative. Public operation. I think, like, if America leaves the UN, I honest to God think there's going to be an alignment with, like, the BRIC countries. Like, I think I could see U.S. almost like saying, okay, screw NATO, we're going to BRICS. Like, if the U.S. leaves NATO and the UN, what would the probability be that the U.S. joins BRICS? I doubt it. It's probably low, like 2%.
Probability assessment baseline scenario. Okay, if the U.S. left NATO and the UN, it would likely pursue unilateralism or a new bilateral coalition rather than joining an existing bloc like BRICS. Okay. NATO is a defense thing. BRICS is economic alliance. Yeah, but if America is trying to align itself economically with the world, doesn't that make kind of sense? Especially if we're going after resources and we're talking about oil, earth, raw minerals, natural gas. Talking about developing the world, not breaking it down. सिर्फ ये एक वन ऑफ केस नहीं है। इससे कुछ दिन पहले भी इलॉन मस्क ने एक सवाल रेज किया था कि एक बात बताओ, You don't think the US is नेटो going to की back out? आवश्यकता क्या है, I नेटो can see का it being an पर्पस option. क्या है? अमेरिकन टैक्स पेयर अपने पैसे से 2/3 यूरोप का डिफेंस क्यों Is this Trump land? झेले? वही टैक्स पेयर मनी इस्तेमाल करो मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर जो इलॉन मस्क के सपने हैं कि एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन ये बनाना चाहते हैं। तो इलॉन मस्क का साफ साफ यहाँ पर ये कहना है, डिफेंस फ्रॉम होम। यूरोप को कोई खतरा नहीं है और नेटो की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे बाय द वे मैं आपको यही बता दूं, दिसंबर 2024 में मैंने ये शॉर्ट वीडियो करी थी अपलोड, जहां पे टाइटल था दिस इज हाउ ट्रम्प विल एंड नेटो। इस तरीके से ट्रम्प नेटो को खत्म करेंगे। ट्रम्प ने Tricks is for Brown countering the U.S. Yes, but what if the U.S. joins? Just play it out with me. What if the U.S. joins BRICS? भी अपने कैंपेन के दौरान, It would इलेक्शन literally be कैंपेन के aligning दौरान with शपथ ग्रहण समारोह से Brazil, पहले ये Russia, काफी बार India, कहा था China, कि South USA Africa. का विड्रॉवल फ्रॉम नेटो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ट्रम्प ने पॉसिबल बोला और अब इलॉन मस्क कह रहे हैं कि समय आ चुका है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं, बट प्रशांत सर आप यूरोप के बारे में सोचिए, यूरोप को कौन बचाएगा अगर It would suck to lose a partnership with France. I'm sorry, France is like changing on me. I don't know if I like President Macron, but I definitely don't hate the guy. नेटो से निकल जाता है। वेल यूरोप ने भी इसकी तैयारी करनी स्टार्ट। No one will let them. You're telling me Modi and Putin wouldn't let Trump in on some BRICS meeting? Oh, you guys see me smoking some ganja. What the are you guys smoking? कर दी है एक न्यूक्लियर शील्ड। बताता हूँ इसके बारे में आपको। Because US will try to take control. No, US will take control. And maybe that's a good thing for BRICS. ना अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यूरोप। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरोपियन यूनियन, यूरोप की बात नहीं कर रहा, यूरोपियन यूनियन की Common बात कर Iran रहा is there? हूं, वहां पर Trump will कितने die, देश but हैं join जिनके Iran? पास न्यूक्लियर वेपन है? सिंस यूके आज के समय यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहा नहीं है, ब्रेक्जिट हो चुका है, तो इसलिए यूरोपियन यूनियन में बस एक ही देश बचा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो देश है फ्रांस। फ्रांस, जर्मनी समेत कई कंट्रीज ने अब आपस में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी स्टार्ट कर दी है कि फ्रांस के न्यूक्लियर मिसाइल्स को, फ्रांस के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को यूरोप के बाकी देश भी अपने कंट्री में स्टेशन करना। You know what? You guys know I'm an idiot, so I'm not too afraid to share my idiocracy with you. I didn't think Ukraine was this big. I'm not gonna lie. I thought Ukraine was like, I don't know, maybe the size of Georgia or like Moldova, maybe Lithuania, even Estonia. I didn't think Ukraine was that big. स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे यूएसए पुल आउट करेगा ना यूरोप से, वैसे वैसे फ्रांस की जो यहाँ पे लीडरशिप है ये बढ़ती जाएगी। ये ऑब्वियसली इमैनुअल मैक्रोन लंबे समय से चाहते थे। इमैनुअल मैक्रोन का ये सपना था कि यूरोप को अगर कोई एक देश लीड करेगा तो वो फ्रांस होगा। और रिसेंटली जर्मनी ने ये बात कंफर्म कर दी है, इनको भी न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए। इधर आप देख पाओगे Yo, you do not get nuclear weapons yet. Nope. Too soon. आर्टिकल, Too फ्रांस soon. could send nuclear armed jets to By the Germany। way, Russia is टेलीग्राफ winning the ने war. ये बात रिपोर्ट करी है। That's what I Now hear. again, ये बात अभी अर्ली स्टेजेस में है क्योंकि अभी भी यूएसए ने पुल आउट किया नहीं है नेटो से, मगर यूरोपियन कंट्रीज ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। यूक्रेन का मंजर देखकर सब लोग डर में हैं, सब लोग सदमे में हैं कि अचानक से ट्रम्प आ गए हैं। ये इतने ज्यादा प्रो रशिया है। बाय द वे, मैं आपके Is लिए anyone ever वीडियो प्लान कर रहा shocked at हूं what Trump does कि anymore? ट्रम्प इतने ज्यादा प्रो रशिया क्यों है। आई ओपनिंग वीडियो होगी ये। आई वुड लाइक टू सी योर रिस्पांस ऑन दैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। खैर, फ्रांस ने ओपनली ये He has a very interesting video on this, and we will be watching it next. But it's basically saying that Trump is there's some ex-Russian guy who's come out and said that Trump has been a Russian asset the whole time, even though this whole case of him being a Russian asset has been proven false. And 51 people have come out and said that they lied about it.
and these were high-ranking individuals. का है कि ये न्यूक्लियर आर्म्ड जेट्स ये भेज सकते हैं जर्मनी में। और अगर यहाँ पे आप Should be. I like. You're saying Putin might have lost some battles, but his patience has won him the war. In all fairness, if we go back to that map, the size of Russia, I mean, patience or persistence. You could just throw enough bodies, and eventually, Ukraine's not. It's not like the 300. The Ukrainian soldiers are not like freaking Spartans back in the day. That little army, relatively little army, in terms of like if you drafted every man in Ukraine versus if Russia drafted every man in Russia, it'd be like a 1 to 300 odd. ये सोच रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज ऐसा कैसे कर सकती है कि फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन स्टेशन कर So I दिए don't know if बाकी that's कंट्रीज में। patience or देखो just persistence. रशिया ने इसकी शुरुआत करी है, अब रूस टूट चुके हैं। जैसे आपको याद होगा बेलारूस देश में रशिया न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर चुका है। यूरोप को अब जेन्युइनली फील हो रही है हीट कि एक बहुत बड़ा खतरा इनके सामने है। देखो वॉर आपको बता कर नहीं आएगी, Yeah, वॉर we के don't need to see a संकेत nuke होते go हैं। off. I don't want to see आपका World War दुश्मन III. क्वाइटली अपने पीसेस मूव कर रहा है, उसकी शक्ल पर स्माइल है, वो ऑब्वियसली अपने पीसेस मूव A president of the U.S. said to be an enemy of America is okay, but to be a friend, you're gonna KIA? करते हुए ये नहीं बोलेगा Huh? कि मैं एक साल में वॉर डिक्लेयर करूंगा। रशिया अभी के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है एक लार्जर असॉल्ट के लिए। यूरोप के लीडर्स फील कर पा रहे हैं कि इन द फ्यूचर यूएसए का सपोर्ट इनको नहीं मिलने वाला। और ये बात काफी हद तक ठीक भी है। देखो मान लो इलॉन मस्क ये सब बातें ना बोलते कि जी टाइम फॉर यूएस टू लीव नेटो, ट्रंप भी ऐसी बातें ना बोलते, तब भी एक बात तो पक्का है कि यूएसए अपना डिफेंस बजट 50% कम करने वाला है। यूएस जिस तरीके से पैसा इस वक्त खर्च रहा है ये सस्टेन I don't think we'll cut. We may spend 50% of the budget, but 100% of it will just stay to the American Defense Force, and less of it going out of our country. है नहीं। ये लोग कटौती That's what I करने get वाले from हैं that. मैसिव स्केल पर। तो उसमें आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए जब इनका डिफेंस बजट 900 बिलियन डॉलर से गिरकर 400 Jesus, साढ़े Shuby. 400 बिलियन डॉलर रह जाएगा, तो ये यूएस खुद अपनी सुरक्षा करेगा और इंडो पैसिफिक में डिप्लॉयमेंट करेगा। यूरोप में मिलिट्री डिप्लॉय करने के ना इनके पास साधन होंगे, ना कुछ इनकी इंटेंशन होगी। और साथ ही साथ अब यूएस में ओपनली यही बात चल रही है जब I'm gonna keep beating this. What if the United States joins BRICS? I mean, look at the deal that U.S. did with India, cutting its exports with vehicles. I think all automotives, and it really pushing the electric vehicle side of it by like 50%. And if I'm not mistaken, I think some industry or like there's gonna be some manufacturing of cars in India now, right? जब डिफेंस बजट अपना आधा हमको करना ही है, तो फिर हम यूरोप में ये नेटो बनाकर बैठे भी क्यों हैं? नेटो का रोल क्या है? यूरोपियंस को खुद को डिफेंड So करने there's दो। already an तो end. आने वाले 4 All I'm trying सालों to में say. ये दो थीम इंटरनेशनल रिलेशंस में आप खूब देखोगे। पहला न्यूक्लियर शेयरिंग, ये आम बात हो जाएगी। अब हर कंट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाकर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे, उसमें फिर प्रॉब्लम्स भी आती है। आरोप लग जाते हैं कि जी ईरान को क्यों रोक रहे थे, अगर बाकी कंट्रीज डेवलप कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये लोग बेसिकली न्यूक्लियर शेयरिंग करेंगे। एक कंट्री ने बना लिए न्यूक्लियर वेपन्स, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स फ्रेंडली कंट्री में डिप्लॉय कर सकता है। अब ये जो तामझाम है कब तक चलेगा आई डोंट रियली नो। इसमें भी कहीं ना कहीं क्रैक पड़ने के चांस है, बट वो काफी दूर But why? Why is everyone wanting to ramp up and have nuclear weapons? है। वो पॉसिबिलिटी अभी बहुत दूर है। फॉर द टाइम बिंग आने वाले 2-3 दशकों में न्यूक्लियर शेयरिंग ह्यूमंगस स्केल पर होने वाली है। उसके अलावा ऑब्वियसली या तो यूएस ऑल टुगेदर नेटो को छोड़ देगा, या फिर आप ये देखोगे कि यूएस की पार्टिसिपेशन नेटो में इतनी कम हो चुकी होगी कि नेटो रिडंडेंट होके रह जाएगा। जैसे काफ़ी हद तक सार्क है, एक ग्रुप बना हुआ है, कुछ मीटिंग होती नहीं है उसकी, कुछ उसमें एक्टिविटी होती नहीं है। तो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। मुझे ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि नेटो को ऑल टुगेदर रिडंडेंट बनाकर Yeah, I think that's the whole reason why we want to pull out is if we pull out, all of the funds for these redundant meetings will go away, and hopefully this alignment for defense because of these ever-ending wars can start to cease, or at least we could start to look for a way to have actual peace instead of, I don't know, perpetuating continuous wars. बस ठंडे बक्से में डालकर भुला दिया जाए। इसको यहाँ पर ऑल टुगेदर नेटो से यूएसए को पुल आउट करना एक बहुत बड़ा कार्य होगा।
कई अमेरिकन ही डोनाल्ड ट्रम्प के Hell, even अगेंस्ट हो if जाएंगे कि America देखिए pulls out नेटो and ने तो Ukraine हमको steps बचा कर in, रखा था वर्ल्ड Ukraine's वॉर not going to टू be से, able to अब fund आप the क्या same कर रहे amount of हैं? money as तो America ट्रम्प जो ये काम करेंगे इसके लिए or इनको give the अपने same amount of देश के influence. नागरिकों को भी समझाना पड़ेगा कि हम ये जो कर रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। बट इधर वे आने वाले 4 सालों में वो होगा जो पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने डिक्लेयर कर दिया है कि इंग्लिश है इनकी। Trick question? It's America, baby. I actually know that one. English is the official language here. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.